Hello, everybody. Keval Kishan, technology coach, again presenting to you success story interviews. Today, we have an amazing student of mine called Sanjay Pandita. Okay, Sanjay Hello. Pandita is a leader into woodworking, and he's a manufacturer as well as trader. And through his woodworking solutions, he's trying to help thousands of clients pan India in setting up their business and providing them the right kind of woodworking which they would require. So, welcome Sanjay into the interview today. Hello, everybody. My name is Sanjay Pandita, and thank you, Keval, for bringing me here for the platform to talk to everyone. It's a Sure. pleasure of mine. Great. So, Sanjay, please tell us about yourself, your business. How did you start the business? When did you start? Overall, a quick journey. My quick journey is I'm a mechanical engineer by profession. I've done my MBA as well. That basically I came from automobile industry, but once I found Mr. Ramu, the woodworking specialist, the guru, and he brought me into woodworking. And in 2006, I started my woodworking career. Now it's 220. It's almost now 14 years into the business. Wow. But I started my own business in 2011 with a small shop. The idea was I was working for a company called Homag as a general manager, and then I was providing a lot of consultancies. I have almost now 4,000 clients to whom I work with Wow. them. 4,000 clients. Really great. And the idea was to provide consultancies, provide them services. The biggest problem with our woodworking is almost 80% of the industry is unorganized. 20% people only are organized. Not only that, in India's most of the SME business owners are not organized. Especially with woodworking, we have a different category because the people who woodworking considered like a carpentry work, but actually it is not. Godrej is also into woodworking. You have to understand Godrej Interior, like Elsor, Divine Innovation. These guys are very good players at that. Like Elsog, you can find many big players. A&A Modeler. These guys are very strong players in our industry. Sure. And So, we provide all the solutions like trading, giving them materials, providing them all the solutions. We also help people to set up their businesses. Like I have set up almost around 1,100 units so far, great. helping them to set up their things for them. And they are phenomenally doing fantastic after that. Yeah. So, Sanjay, you said that you are handling 4,000 clients and, Yeah. you're into business past, like it has been more than a decade. Yeah. So you must be facing a lot of, challenges in managing everything, and it might be like, taking a lot of efforts. Like It's all, before the MBA program, what do you think? Share us some. yeah. Before MBA program, yes, Keval, I will be very frank, it was very difficult for me to make systems to go. I was always having a dream to do something that is more systematic because I have worked with the bigger MNCs, 900 million euro companies where they are very big in the size, but everything is system driven. But when I started my own, nothing is working. Like I am the only man who is doing it. And then placing myself for everything. It's like a firefighting for everything. Yeah. It was a most difficult task for North Indian businesses, like to find payments back to your system. Payment follow-up is a big problem for you. Payment follow-up was a big problem. Like marketing for everything, it was like I have become like a hukum ka ek ka placing everywhere, but it was very difficult. But it was always a dream to, and even the ideas of our company is that we have different verticals for everything. We have one company, SS Coating, that is working for a particular company called Technovis. They supply paints. Another company that works for machinery manufacturing. They also are into wood adhesives. We are into different trades. But the biggest advantage what Cable we did was that we have different verticals and different people assigned to that job. So that means consistency and repeatability of work what they are doing. They become mastery into that. And I was always having a dream system that after meeting you, it has a phenomenal change for us. I have been able to think. I have to whatever was inside me. I was able to put it outside and put it documental. That was important. Documentation was important part. Great, awesome. So in terms of Sanjay, managing, you told me that doing the marketing, taking the payment follow-up, these are the challenges that you were facing, and Yes. you were into each and every part, right? Yes. As I told you in the program itself, there are 3 stages. As a technician, you're managing everything on your own, and then as a manager, you focus on building processes, and then as an entrepreneur, you have the process and you're focusing on goals. Yes. So now you feel that you're shifting from being a manager to entrepreneur and a technician to manager and an entrepreneur. You feel that? Yes, I am feeling that change in me. Actually, 2 years back, I started a very small part in my company, what is called thinking, inking, and implementation.
Great. So we created in our office like there should be somebody who is thinking for it, and then somebody has made it a documental and sent it to the implementation part. They are doing something, but Sure. सब कुछ हो नहीं रहा था. मतलब Yeah. pretty frankly, it was more to limited to Sanjay Pandita or more to entrepreneur's head only. He want to do Yeah. it. It's like you don't become an entrepreneur. You are becoming a entrepreneur. It is not an Yeah. entrepreneur. The word That is true. entrepreneur is like you want to do, but कुछ कर नहीं पा रहा है. But Yeah, fine. Michael E. Gerber has said in his ebook, a book called E-Myth, he said that 80% of SMB business owners right now struggling because they are managing everything on their own, Yes. whether it is marketing or sales or account or operations. Yes. They have foot in each and everything. And the worst part is that there is no reporting which is coming to them. There's no person who is updating it to them. It's them who keep following with each and everybody. Yes. That is where, it does not, you do not get to know when the entire goes into this. Entire day goes into this. Even the biggest mess, even they consider is like this WhatsApp has created a big mess for us. Okay. I have to keep a person. I have a lady in my office. She only does only thing. Whatever the people have written in the WhatsApp group, she was shifting whole the data to an Excel sheet or some Google Sheets and then making it as a draft. And after 1 month, she is saying, "Baba, is call ka kya hua?" Even that sales call does not know it. It was a mess for us. It was a mess. But thanks to you, I will be very thankful to you. You have given us a daily reporting chart for that Google Sheets. Now everything, you will not believe. I have now I calculated yesterday night. It is around now 29 Google Sheets we work every day. Wow. 29 Google Sheets. Everything is on Google Sheet. Every form is there, like daily reporting form. Even my customers have a problem. He sends me like, he fills up a form and it comes to me, and automatically it is shifted to another guy and he is reporting it. अभी वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको क्लिक करता है चला जाता है, ईमेल भी चला जाता है. That is what the power of technology is. And believe me, I am not a technologist. I am a mechanical engineer. Computer के साथ बहुत दूर का रास्ता नहीं है. I know, but now you must be pretty comfortable with the G Suite platform. Yes, it is comfortability. It has given me a lot of power. Rather, I am feeling more comfortable. Even you can see in the lockdown time, I'm not losing my heart. I am happy. Still, we are getting something. It is moving, and we have especially in this lockdown time with this technology platform, we have been able to do a lot of things. सबसे अच्छा काम हुआ अंदर की शक्ति को पहचान लिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं. वो अच्छी बात ये थी, and we have found a guru like you who has helped us a lot. No, welcome. Thank you. Sanjay, tell me more about your days working. That everybody has 7 to 8 hours a day. Yes. What difference came in before the program and after the program, especially in managing your day and time? Yeah. Basically, earlier, if you look at the before the program and after the program, specifically before the program, I was more or less managed. ऐसा ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था. But हमेशा क्या होता था, फायर फाइटिंग रहती थी 24 घंटे, और दिमाग में ही रहता था कि यार ये काम नहीं हो रहा, अब मुझे वहां जाना है ना. जो हिस्सा आपका कमजोर पड़ रहा है उधर आप जाते हो. यू आर बिकमिंग लाइक, अरे तू कमजोर पड़ रहा, हाँ मैं तेरे साथ. यू आर बिकमिंग, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं है एक्चुअली. आप समझो, अगर आपको केवल यू हैव टू डू मार्केटिंग तो एक बेसिकली इज अ लीड जनरेशन प्रोसेस. इट इज अ बेसिक फूड फॉर एवरीथिंग. हर धंधे का सबसे पहला उसूल है कि मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा. यू हैव टू सेल योरसेल्फ. सो मार्केटिंग में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. तो मार्केटिंग में क्या है, जब मेरे को टाइम मिल रहा है तो मार्केटिंग कर रहा हूँ, और जब मेरे को टाइम मिल रहा था मैं कैटलॉग मेलर भेज रहा हूँ. मतलब कुछ रेगुलर नहीं है, रेगुलर कुछ नहीं. कंसिस्टेंट मार्केटिंग गिव यू कंसिस्टेंट लीड्स. Yes. Consistent follow-ups gives you consistent sales. Yes, that is important. And वो हम लोग क्या करते थे? Consistent work planning give you consistent operational results. So every result has a word called consistency. Yes. That is into the input. If you don't have the consistent inputs on anything, you will not get the consistent results. And the part is that people are trying to manage it just on the simple Excel files or just on the diaries. And they are not opening themselves in the technology. So tell us about on how comfortable do you find now in terms of the technology versus you were, and what do you think in terms of your industry as well? What kind of mindset the business owners are having in terms of technology, and why they are not able to scale till now? Even our industry, if you look at the woodworking industry, they are they're very good people. They are very true with their heart. They work very hard. But the problem है यही है कि कोई भी documentation नहीं करता है.
ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हमारी इंडस्ट्री में अकाउंट्स का होता है, और आपने उसको क्या माल बेचा, उसका इनवाइस क्या है, भाई वही वही पे हो रहा है. Yeah, And true. if you look at, even I have a software business as well, which is another vertical where we help people to design the whole, like EMOS is one of the design software that people do. जो आप काम कर रहे हो वो सब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे करो, and we train them to Sure. how we do it. बट अभी कैसा प्रॉब्लम है कि these guys, if हम उनको मेल भेजो तो वो मेल नहीं पढ़ रहा, व्हाट्सएप में वो खुश है, अरे यार यही चल रहा है, बट ठीक है यार, मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, बट इवन What do द you think फ्लो इज without using technology, do you think they will be able to scale, or do you think it's not no. possible to At scale? without technology, believe me, केवल it is impossible, because ह्यूमन ब्रेन कैन, जो हमारे यहाँ एक कहावत है ब्राह्मणों में कि 10 दिन तक ही, नई बात 9 दिन, तो 10वें दिन आदमी भूल जाता है. इवन पीपल हु इज अ सन और अ फादर, यू विल फॉरगेट हिम फॉर आफ्टर 10 days, बिकॉज योर ब्रेन विल, इट्स ह्यूमन ब्रेन. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कोई पीछे तो याद रखने वाला चाहिए, तो आपका कंप्यूटर आपके लिए याद रखता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. Yeah. So in terms of the lockdown period as well, do you feel that after the lockdown the customer behavior is going to change, and business automation is going to be need of the hour for Yes, everybody? it is definitely yes, because अगर लॉकडाउन के पहले क्या होता था, I was having some set of 200 or 300 customers consistently working. After that अभी उनका बिहेवियर कैसा है, सब नेगेटिव है. उसको पूछते हैं कि साहब क्या हो रहा है, अरे साहब आजकल तो धंधा नहीं, वो नहीं है. बट अब इसके पीछे काम कैसे करने वाले हैं, हु इज गोइंग टू फॉलो. एक अब तो, एक तो हमें डिस्टेंसिंग के साथ काम करना है. वी कैन नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रैवल टू पीपल एंड जैसे पहले करते, बार बार मिलने जाते तो होता था. लेकिन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम उसको पीछे से, इट्स लाइक अ सेल्फ सिस्टम ड्रिवन, कि आज मुझे इतने Cloud लोगों से, based, cloud क्लाउड बेस्ड based. सिस्टम होना चाहिए. आपका कैटलॉग फॉर्मेशन जो अभी करते हो, फिजिकल कैटलॉग भेजते हैं, फिजिकल कैटलॉग नहीं चाहिए, डिजिटल कैटलॉग चाहिए. सिंपल सा फंडा है, अगर आपको दोनों का मोटा मोटा डिफरेंस आपको देखना So I was talking to Akhilesh. He said, है. "Ki we have website, we have intra-site, and now any of my sales team goes to any client, they used to carry like a bundle of 100 documents. Now Correct. they are just carrying a mobile, and on the internal site they have everything. He just opens Yes. it up and he shows it. It becomes really easy. And second thing which he mentioned, that in terms of the lockdown period, he said, "Ki few of his friends who are into the architecture." They're saying that we're completely free. We don't have any business. And he said, every day I'm getting 4 to 5 leads, and I have doubled my work in the lockdown period itself. So do you also feel the same that your other people who in your industry, they are struggling, whereas especially people who are using the technology, उनको इतना बड़ा hit नहीं पड़ा है lockdown का? Like जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, one more customer for Shark Shop Fittings. He is a very good friend of. I know Akhilesh ji very well. He has been our customer in Homag as well. Sure. I know many people who are more technology driven. उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो consistently इधर, अब कभी भी Zoom कॉल पे रहते थे या आपकी किसी भी कॉल पे रहते थे, यार मेरा ये इतना स्लॉट अवेलेबल है संजय, इस टाइम पे मिलते हैं या इस टाइम पे बात करते हैं. I spoke to many people. बट जो टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे, अरे बस वो नेगेटिविटी में ही पड़ा रहा, तो कुछ हुआ नहीं. उसके लिए तो धंधा अप्रैल और मई में 0/0 ही था. तो बेसिकली दैट इज इम्पोर्टेंट इज टू, अगर आप हमने भी इसमें बेशक रेवेन्यूज नहीं जनरेट किए, आई विल बी वेरी स्ट्रेट टू, इन 2 months वी हैव नॉट जनरेटेड मच रेवेन्यू. बट आपको ये नहीं पता कि हमने कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लिया इंटरनली. हमने अपने लर्निंग प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आज हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया जो हमारे लिए अगले 10 साल तक हमारे लिए खाना बना के देगा. Sure. So, Sanjay, tell us more about all these systems which you have created. Tell us at least 5 specific systems which you have created in the MBA program. मेरा हमेशा ड्रीम था कि अगर मेरा कस्टमर कोई इंक्वायरी भेजे, उसको ऑटोमेटिकली मेरा मेलर जाए और ऑटोमेटिकली मेरा कैटलॉग चला जाए, मेरा जैसे फॉर्म नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्म नोटिफिकेशन. जब आपसे मिलने के बाद मुझे नोटिफिकेशन देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो सब सपनों वाला आदमी है, जो मैं सोचता हूँ वो कर रहा है. So that was a dream come true that way, and many other things like daily reporting was a mess. मेरे WhatsApp में बता रहा था आपको, मेरे इससे पहले सब, मेरी एक शिल्पी मैडम है, she is only doing, वो पूरा सेग्रीगेट करती है सारे ग्रुप्स को, फिर एक्सेल शीट में कन्वर्ट करती है, कॉपी मारती है, फिर वहां से पेस्ट करके वो पूरा डेटा बनाते हैं. मेस होता था सब कुछ. फिर लकली जब से ये फॉर्म हुआ, आई नो इतने लोगों ने काम किया, इतने घंटे तक काम किया, आई वाज एबल टू ट्रैक द परफॉर्मेंसेस ऑफ एवरीवन. आज कोई मुझे बोलता साहब मैंने तो ये काम, बहुत सारा काम करा, दिखावा मत बताओ भैया, तुमने क्या क्या काम किया, देयर इज रिटन और नॉट, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज नॉट रिटन. सो एक बार वो सिस्टम को थोड़ा फॉलो अप करना पड़ता है.
Sure. But it is a big change. Technology has brought us a big change. Sure. So you said, one of the things which you said, like the email marketing, that whenever somebody is filling your lead generation form, Yes, which you must have built on Google form, yes, is helping your client to receive whatever information that you want. So Not that is only- on the client, sales side. Tell us more about the marketing side, operational side, team management side. एक हमारे लिए सबसे अच्छा काम वो हमने एक नया बनाया कस्टमर डेस्क. कस्टमर Customer डेस्क desk. बहुत सिंपल सा टूल है लेकिन इतना पावरफुल है कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट. उसमें क्या किया हमने कि आप कस्टमर को एक लिंक दे देते हो कि साहब आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए कलर में आउट हो गया, कलर इज नॉट परफेक्ट और कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल हार्डनर काम नहीं कर रहा, वट एवर इट इज. Yeah. अब वो क्या करता, सिंपल एक बार वो सिर्फ फॉर्म भरता और ईमेल आईडी अपनी डालता. उसमें हमने क्लियरली लिख दिया प्लीज मेक दैट ईमेल आईडी जिसपे ये हम लोग आपको फॉलो अप करने वाले हैं. तो अब वो उसी फॉर्म्स उसी ईमेल आईडी को लिखता है. इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम वेयर इट इज फिलिंग इट, बट उस आईडी को चाहिए. नाउ दिस आईडी बिकम्स अ बेसिक सिस्टम फॉर आप. जैसे अमेजोन में अब अच्छा काम क्या होता है, जैसे वो इंक्वायरी भरता तुरंत मेरे यहाँ से चला जाता, थैंक यू वेरी मच वी हैव बीन रिसीव्ड योर इंक्वायरी, वी आर डूइंग इट. The moment I assign it to some of my technical person, automatically it goes as it has been assigned to that fellow. Yeah. अब कस्टमर को लग रहा है कि यार मैं कोई काम तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली मैं तो सिर्फ एक क्लिक कर रहा हूँ. Believe me, I am not writing any code, कुछ नहीं, मुझे नहीं आता. I am a mechanical engineer, I am not a software fellow. बट एक सबसे अच्छा काम हो गया कि उससे उस कस्टमर जब तक वो फॉर्म कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको रोज मेल आ रहा है कि आज ये हो गया, अब ये हो गया. Customer help desk, the customer inquiry, the customer query, the customer complaint resolution, the customer support department you have created with this one tool without hiring any new people. Nothing. Nobody is hired. I am only hired man. मैं सिर्फ अपने 2 मिनट लगाता हूँ उसमें सिर्फ. Sure. Just assign करने के लिए कि मुझे किसको देना है बस. Yeah. That is because I know the best. Without it, how much time was going into handling the inquiry? अरे पहले क्या होता था, राजेश फोन किया क्या, तूने देखा उसकी ये प्रॉब्लम आ रही है, बात कर ले, व्हाट्सएप पे मंगा ले, अच्छा हो गया क्या, नहीं हुआ, नहीं साहब अभी नहीं हुआ, अभी मैं करता हूँ. वो करता वाला काम ही खत्म हो गया. आज उसको मैं ये पूछता हूँ, देखो भैया 48 घंटे हो गए, दिस वाज द टारगेट टाइम, यू हैव टू अचीव इट. 48 घंटे में तुमने इसको खत्म करना था मसले को. हो गया, नहीं हुआ, नहीं होता तेरी परफॉर्मेंस खराब है. No, it is a tracker for him. That is true. Great. That is, so, in terms of, I think the usage of technology which you are especially doing in SS Quoting, that is something which your customers are also going to realize. And this is one of the USP that you have, and that is the reason you're able to handle 4,000 clients consistently, and you're able to provide them the good service as well. So kudos to you on adapting the technology. Besides customer desk, besides email automation, tell us more about the team management side and the operational side, where you are doing your core operations and team management. What are you doing? What are the takeaways that you have specifically from the MBA program that you're using? I am not yet finished up with my intra site. Actually हमने एक ऐसा एक साइट बना, लोगों के लिए तो सबके लिए वेबसाइट है, जैसे जनरल पब्लिक के लिए हमने अपनी बात कह दी. तो लेकिन अब मेरी टीम को क्या प्रॉब्लम है, अब उसके पास क्या टेकअवेज है कि उसको कुछ नया लड़का है, उसको नहीं पता कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. अब वो या तो अपने सीनियर को पूछता है, अब उनकी नहीं बनी तो बहुत सारी कहानियां होती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू द टीम्स. बट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि मैं उसको वीडियो दिखाऊं कि यार ये प्रॉब्लम. आज एक पेंटर है, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ही इज नॉट वेल एजुकेटेड, ही नोज हाउ टू पेंट, ही नोज हाउ टू स्प्रे, ही हैज समथिंग इन हिज लाइफ. हर किसी आदमी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता है, उसके पास भी है, बट अब उसको समझ कैसे आएगी, ही इज नॉट वेल एजुकेटेड. वीडियोज आर द बेस्ट मार्केटिंग. So Loom is something which you are going to use for recording and lot of in short. हर दिन मैं इन शॉर्ट के कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता हूँ. ग्रेट, ऑसम. वो मेरे इतना काम आ रहा है, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं हम लोग. आज कुछ भी हमने स्टेन में नया बनाया, हमने ग्रीन लैम्प के लिए भी नए कुछ स्टेन्स डेवलप किए. अभी हम लोगों ने किसी और कस्टमर के लिए, जैसे हमारे पास यमुनानगर में बहुत सारे विनियर बनाने वाली कंपनी, उनके लिए कुछ स्पेशल कलर के स्टेन्स डेवलप किए, जो आप डेकोरेटिव विनियर जिसको, तो उनके लिए स्टेन्स बनाए. तो वो स्टेन दुनिया को पता चलने चाहिए. कैसे पता चलेंगे, हाउ टू, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. इन छोटे छोटे वीडियोस ने क्या काम कर दिया. दे आर डूइंग फैंटास्टिक. मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट पे. In terms of your order or management, Sanjita, like 3 months down the line, 6 months down the line, using this technology, what do you think, how easy will it be for you to manage your order processing through Google Sheets?
It is very easy Flow now. management system. मैंने एक फ्लो प्रोसेस चार्ट, इनफैक्ट हम लोगों ने वो फ्लो प्रोसेस चार्ट को मास्टरी कर लिया, बिकॉज हम लोग कंसल्टेंसी में भी है नाउ। आई हैव हमने उसमें धीरे धीरे अपनी मास्टरी कर ली है। हमने अलग अलग कस्टमर्स को उसकी एक कॉपी भी देने लग गए हैं हमारी तरफ से कि आपको Oh, कैसे फ्लो प्रोसेस करना है। great. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप एक फ्लो प्रोसेस चार्ट हाथ से बना दीजिए। जैसे मैंने ऑर्डर एंटर किया तो मेरे पास टाइम लैप्स में उसका टाइम दिखता है कितने बजे। नाउ आई नो व्हेन इट इज टू बी डिलीवर्ड, मुझे उसको पूछना नहीं पड़ता अरे वो माल डिलीवर हुआ क्या, सब खत्म हो गया था। तो FMS is gonna change the way you handle your operations. That's gonna यस, change the way you manage your orders. वो हमने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है ऑलरेडी एफएमएस को। दैट इज डूइंग रियली अ बिग हेल्प फॉर अस नाउ। Okay, but without FMS, without having these kind of tools, do you think you will be able to manage more orders with less employees, or it becomes really headache, यस, becomes really difficult? नहीं नहीं, इट हैज बिकम अ बिग हेल्प फॉर अस, बिकॉज क्या होता है, मुझे हम लोग एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू ले ऑफ एनीवन, बट इट इज इम्पोर्टेंट इज कि दैट जो हम स्पीड से जाना चाह रहे थे, अगर मैंने जिसको 10x बिजनेस आप कहते हो, वो 10x आज दिख रहा है, वी विल बी एबल टू डू इट। Great, great. So, like 3 months down the line, 6 months down the line, 1 year down the line, what are the top 5 like results which you are going to achieve in your marketing, in your sales, in your operations, in your team management, and in your personal day management? So let's start with marketing. What do you think? 3 months, 6 months, 1 year down the line, how it is going to change your marketing, and how it is going to, how much like leads are you expecting every day through this? तो एक्चुअली क्या सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मेरे पास 5,000 कस्टमर है और शायद आप ये नहीं मानोगे केवल कि आपने क्या कमाल कर दिया। मैंने 2006 में कोई एग्जीबिशन करी थी, आज तक मैंने वो कभी भी डाटाबेस में डाले नहीं थे वो कस्टमर। अब आप सोचो अब आप तब से आप सोचो, और 2006 से इस लॉकडाउन में जितने हमारे पास लीड्स आज तक की जनरेटेड थी, या कभी वो कस्टमर से हेलो हुई थी या कार्ड एक्सचेंज हुए, तो वो हमारे पास डेटा था, हमने एग्जीबिशन करी। Wow. उन डेटा को एक जगह लाना, उन डेटा को इकट्ठा करना, अब हमारे पास सबसे अच्छा काम हो गया। एक्चुअली कस्टमर तो वही है, चाहे वो उस टाइम पे 2006 में अगर आप एएफसी देखोगे शायद बहुत ही छोटा कस्टमर था या था भी नहीं, या एल्सॉर्ग अगर आप देखेंगे इतना बड़ा कस्टमर है, वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स इन वुड वर्किंग इन नॉर्थ इंडिया, वो बहुत छोटा कस्टमर था, लेकिन आज वो बहुत बड़ा कस्टमर है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर, एंड उनके साथ हमारे रिलेशंस बहुत है, लेकिन हम कभी मिलने ही नहीं गए, वो कंसिस्टेंट मार्केटिंग नहीं हुई ना। Right. अब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, दिस विल क्रिएट अ बिग, एंड आई एम श्योर मार्केटिंग कंसिस्टेंट होगी, सेल्स भी अच्छी होगी, लीड जनरेशन करंट होगा, एंड So सबसे sales. अच्छी बात है मैं जो काम आज कर रहा हूँ वो लोगों को पता होना चाहिए। पता चला कि यार आज तो ये संजय पंडित ये कर रहा, कल को कुछ चेंज कर तो नहीं रहा हूँ, तो चेंज करना आसान हो। तो Yeah. टेम्पलेट सबसे अच्छी बात है, जो आपने टेम्पलेट्स हमें बताई कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट होती है, जो मेलर्स मास मेलर्स शुरू हो गए, तो उससे फर्क पड़ना है। In terms of what do you think, Sanjay, in terms of your sales, in terms of your team management and operations, 1 year down the line, how much increase in the sales are you expecting after the lockdown? एटलीस्ट अभी तो चलो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत ही शैटर्ड सिचुएशन है, वी आर नॉट एबल टू जनरेट मच सेल्स, बट आई एम श्योर अगर सब सामान्य हो जाता है, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू मल्टीप्लाई बाय 3 मिनिमम 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स इज कंफर्टेबली होना चाहिए। And credit goes to technology? Credit goes to my coach. Okay, no. The coach is just training on the technology part. That's it. My contribution is 20%. 80% is your contribution, Sanjay, because you have devoted your time. People are not serious about their business. People are spending more time on Netflix than getting their business upgraded. But they don't realize that business is the bread and butter. Yes. Business is giving them car, business giving them house, business is giving them the money through which they are paying their kids' school fee. And still people are not working on the business. That's why I feel really bad for few of the business owners that they have not realized the power of technology, and they're not ready to change. That is the worst part. But I am sure people like you will certainly motivate them. मैं तो एक सिंपल सी बात समझता हूँ केवल, देखो बिजनेस ओनर में आपने बहुत सारी मेहनत करी है, 10 साल 15 साल आप कंटिन्यूअसली ना, यू आल्सो वांट टू गेट सम लेजर, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहना अच्छी बात है, बट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अभी तो मार्केट का सिनेरियो डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट लेवल पे है, आपको होना चाहिए, लेकिन एक बंदा ऐसा होना चाहिए ना, जो आपका सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर है, वो आपके लिए काम कर रहा है, आप नहीं काम कर रहे हो भाई, आपके पीछे एक टेक्नोलॉजी सिस्टम काम करे। द मोमेंट यू हैव अ सिस्टम सेटल्ड अप, इट इज वर्किंग फॉर यू,
Netflix देखो भाई, आप कुछ भी देखो, go for a movie. I am not saying Netflix is a bad thing, but you enjoy it. It's your time. But जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो धंधा आता है, सेल्स रेवेन्यू देता है, ये तो सबको पता है। Yeah. अगर आप सेल नहीं होगे तो बाबा कुछ नहीं होने वाला है। I appreciate one of the gurus of our industry, हेटिक के गोयल साहब है, उनका कहना है कि जब तक सेल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं दुनिया में। It is important. Sales is the bloodline and the systems are the backbone. Yes. और सेल्स तभी होती है, और अच्छी सेल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेल करके पैसे वापस जब तक आपके सिस्टम में नहीं आते थे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव गुड सेल्स, गुड रेवेन्यूज फॉर यू, बट इट ओनली कम्स फ्रॉम सिस्टम्स। व्हेन योर सिस्टम टेल्स यू दैट बाबा इसमें आपका मार्जिन 10% या 5% या 7% है, तभी तो वो सिस्टम ही कैलकुलेट करता है। एंड दैट शुड बी हैंडी फॉर यू। आपके हाथ में होना चाहिए, जैसे आपने बोला मोबाइल में आपको पता होना चाहिए इस धंधे में मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है। Sure, sure. So, Sanjay, on the final remarks, in terms of the two companies that you have, especially SS Coating, where you're the leader in the trading, Yes, sir. and the other company where you are specializing with woodworking, Yeah. 3 year down the line, what is your goal in terms of taking this company to the number of customers? Right now, you have 4,000 customers. What Yes. is your goal in next 3 years using technology? How much more you want to scale Pan India? If I look at two ways, one is the revenue way. We presently are not a very big company, but fairly okay. We are now 20 people almost. I have 6 branches, including many people from other companies. They also work together with us. So we are approximately 7 CR turnover now, and we look forward down the line in next 4 to 5 years, we should be around 20 CR minimum. And my dream is always to generate more employment for my country and to have bigger verticals for us. And we have already a plan. It's already ready for next 5 years what we are going to achieve, and what it is. The target is around 20-25 crores, 20 to 25 crores. Sure. And in we terms have of the customers, right? terms So 4,000 customers. How many customers do you want to serve? at least we should have 20,000 customers. That is important. 20,000 customers. So Wow. Next 3 years, you are planning to do that. Yeah, the next 5 years. 5 years. Wow. 5 years. But 20,000 is not a big number for us. Believe me, it is not big for us. Great. We will do it, and because woodworking industry is a small business, but believe me, it is completely a different world. यहाँ पर लोग सब दिल से काम करते हैं. Oh, got it. So, Sanjay, what final message you would like to give to the SME business owners in India, especially manufacturers and traders? What is the final message that you would want to give to them, especially on terms of technology and managing their business? My most important message to all my friends who are into SMEs or upper level of the, and biggest important is don't become entrepreneur and cantrepreneur. नहीं यार ये नहीं हो सकता. Entrepreneurs are different. You have to be a different, and आपको एक बार समझने की कोशिश करने पड़ेगी कि जब तक आपका सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी आपके लिए काम नहीं करेगी, तब तक आप आराम नहीं कर सकते. You cannot sleep well. If you have to sleep well, best is allow your system to work. आज मैं भी अपने ऑफिस में नहीं हूँ, घर पे बैठा हूँ. You can see my background. I am sitting at home, working from home. But my systems are in place. Everything is working. Even a customer उसको कुछ भी चाहिए तो मेरा system काम कर रहा है. My Mumbai office is working. My Jalandhar office is working. Jammu office is working. Delhi office is working. Faridabad is anyway working. हर कोई अपना काम कर रहा है. And it is they are all controlled by one system. एक छोटा सा हमने system बनाया, एक CRM system बनाया, या हमने अपना intrasite बनाया. सबको पता है क्या करने वाले हैं. Even customer को problem है, वो अपने आप system से derive हो जाता है. Issue खत्म हो जाता है. So that is what should be. You should place your systems and find a good coach like us, and that is the best part. Great. That will help you to आपकी अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगा. गुरु बिन गति नहीं. Thank you, Sanjay. In fact, I look forward to work with you more and more in the future. Yes, thank you. And next 2 years, 3 year, 5 year down the line, and I'll try my best to help you achieve your 20,000 customers and your 25 CR business. I'll try my best. Thank you, Guru. Thank you, Keval. Okay. Thank you for that. So thank you, Sanjay. It was Sanjay Pandita from SS Coating, who is helping people into woodworking and trading, and right now helping more than 4,000 customers. And using the technology, you want to scale 10x in his business. So thank you, Sanjay, for being here, and we look forward to serve you more. Thank you so much. Take care. Thank you. Bye.